السلام علیکم ناظرین، واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ آصم صدیقی حاضر ہے، اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ جو ہیں میاں وسیم ہیں۔ اور آج ایکچولی ہم کہیں اور آئے تھے، جو چڑیوں کی آواز آپ سن رہے ہیں یہ ایک بیک یارڈ میں ہم نے اپنا اسٹوڈیو لگایا ہوا ہے۔ اور محیط پیر زادہ نے جس طریقے سے پاکستان کے بارے میں بات کی، افسوس ہوا، کیونکہ جو باتیں وہ پاکستان کے اندر کیا کرتے تھے، باجوہ صاحب کو اپنا تصور کیا کرتے تھے، ہر چیز جو ہے اس زمانے میں سب کچھ صحیح تھا، ایک پیج پہ چلتے تھے۔ آج وہ سب لوگ جو ہیں، جو کل بہت اچھے تھے، آج وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جب واشنگٹن میں بیٹھ کر انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جو میرے کو نہیں بلکہ ہر اس محب وطن پاکستانی کو بری لگی جو کہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ تو میرے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ آپ کو جواب دیں، اس کا جواب دیں آپ۔ تو میں نے کہا اس کا جواب تو اب گورنمنٹ آفیشلی دیں گے، کیونکہ انہوں نے گورنمنٹ ڈاکومنٹ کا بھی مذاق اڑایا ہے، جبکہ پورا انہوں نے وہ لیٹر پڑھا تھا اور اس پڑھنے کی ویڈیو بھی مجھے بھیجی۔ اور ان کو یہ شکایت تھی کہ وہ ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، لیکن وہ بعد میں مجھے ویڈیوز لوگوں نے بھیجی، جس کے اوپر میں نے ٹویٹر پہ لگایا اور اس کے بعد وہ وائرل ہوئیں اور سب نے دیکھا۔ بہت سارے دوستوں نے اس کو دیکھا اور مجھے کالیں بھی کی، مجھے میسیج بھی کیے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید اب تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا، بہت آپ لوگوں نے نفرت کر لی، بہت آپ نے نعرے لگائے تھے پاکستان میں۔ مطلب میں 26 سال سے یہاں پر ہوں، میں نے پاکستان کے بدترین نعرے یہاں لگے اس میں پاکستان پی ٹی آئی کے لوگوں نے پاکستان فوج کے خلاف نعرے لگائے، پاکستان کی آئی ایس آئی کے خلاف نعرے لگائے، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا کہا۔ اگر یہی سب پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتے تو ہم سمجھ سکتے تھے، لیکن نہیں، ایک خاص طریقے سے وہ انوالو ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے بارے میں، وہ بھی ایک خاص قسم کا طبقہ انوالو ہوا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں کو دیکھیں، فرنٹ لائن پہ دیکھیں، وہاں کون بیٹھے تھے، 17-18 لوگ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے تھے۔ 3 سوالات پوچھے گئے، تینوں پی ٹی آئی کے لوگوں نے پوچھا، ہمیں سوالات کرنے کی اجازت نہیں دی۔ وسیم، ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ ناظرین اور آپ کے درمیان اور حائل ہوں۔ اس پورے سینیریو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ محیط پیرزادہ کو امریکہ کا لاء ایک دفعہ اور پڑھانا پڑے گا۔ یہ پاکستان تو ہے نہیں کہ آپ نے لگا دیے ٹھک سے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ذلیل کر دیا۔ یہاں پہ رسپیکٹیبل وہ ہوتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں لوگ ایسے اداروں کی۔ جی First of all, Asim, thank you so much for having me again. Last time جب ہم نے program کیا, so I have decided کہ I think that was enough. And the purpose of that program was entirely to give a message to our friends and community to uh, just slow down. You cannot do what you are doing, because that is damaging the name of the motherland. اور اس پروگرام کے بعد میرے پاس جو میسیج آیا، جو کہ لیٹ می جسٹ ڈسکلوز دیٹ، کہ پی ٹی آئی کے جو مین ہیڈس تھے، جو پی ٹی آئی کی جو ٹیم تھی، انہوں نے ایک میٹنگ کی۔ اس کے بعد میرے پاس یہ سارے بندے پہنچے اور ان کا جو ہیڈ تھا وہ میرے پاس آیا۔ آئی ریدر ناٹ ڈسکلوز ہز نیم۔ اور انہوں نے مجھے یہ آ کے بات کی کہ we will think about it and we will try not to go to certain extent. لیکن میں نے جو ایک چیز فیل کی اس کے اوپر، جو میں یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ being a Pakistani and being from that land، ہمارے اوپر یہ ایک we owe it to the land۔ اور ابھی جو آپ کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا، یہ جو محیط پیرزادہ صاحب نے بات کی، اور ہم نے جو پریویس پروگرام کے بعد جو ساری چیزیں جو شٹ ڈاؤن ہوئیں، جو کہ کنٹینیوسلی ایک چیز چل رہی تھی، یہ جو پی ٹی آئی کے سارے لوگ تھے، they were very much charged. اور even in their video clips they were saying we're just going to go to the White House, we're going to go to the Pentagon, we're going to go to the embassy, we're going to go to the defense attaché house. The PTA leader, I don't want to name him, and everybody knows that because you guys have seen that video. So but after that program they completely were out of the scene. They didn't want to do it, and they haven't done anything since.
our last program. I'm not sure about the date and time, Mm. but they haven't done anything. Internally, I mean, you can support, you can do whatever you want to do. It's up to you, you know, because you have there's so many people claim the First Amendment, right? So I'm going to do it the First Amendment program as well, because the First Amendment is not about what you're doing. Inciting violence is against the First Amendment. Many of people are under the wrong notion, like so-called the PTI leadership. Not many, but few who thinks they are um, well educated and well versed in the U.S. system. First Amendment doesn't mean you can incite violence. And your program and what you have been doing, it was inciting violence because it was provoking me. It was provoking a lot of people like me. So you cannot provoke. Provoking somebody meaning you are inciting, injecting violence in society. So that is completely prohibited in First Amendment. That's the answer for the First Amendment. Now, Mr. Pirzada, you know, he claimed to be, you know, residents of uh, America, United States of America, and I hope you have. And now I'm directly engaging you, Mr. Muhit Pirzada, and I hope you have a hard evidence in form of a video clip or a copy, because you have accused Asim Siddiqui for being a part of a Pakistan establishment, and you have said, you have actually accused him. You know, he's been working for the embassy, and people like him work for the embassy, and they create such clips, and then they create fame. You might think you are Larry King. In my opinion, you are not. You were hired by one person, Mr. Niazi, and you have served very well. And you know, you were the hired gun, but you have accused Mr. Asim being a hired gun and copying the videos and trying to promote himself. But in reality, he was trying to show you the letter from the Department of Justice. But you have said in your clip, you said that was a letter like you carry a doctor note. In other words, you were saying, like, you know, he was carrying a prescription from a doctor note and carrying around for years and years. And, you know, and we know that in our culture, what does that mean? But the reason I'm trying to explain this in a local language, because you were in Washington, D.C., on a Washington soil, where you were in the presence of lawmakers, and you have accused Asim, and I hope you have evidence to prove he is hired by the establishment. In other words, you know, I want Asim to play the clip, you know, where the person you put a picture in the Rabin building, Imran Riaz, right? Am I right or wrong? Imran Riyaz. Imran Riaz, you know, the person who is missing, you know, and I feel bad for him is missing, and I hope they recover him soon. Everybody have the right to say whatever they want to say, you know, as a journalist. You are a journalist, you know, so, you know, so many other people. So you guys, you know, put his picture and another female picture, you know, he's a missing person. And the same person engaged you in one of the event where he was asking you, the establishment of Pakistan had provided the documents to you and to him, because the previous government was corrupt. So you were part of the establishment, the same establishment you're working against now. Just because your chosen leader or saint, in my word, is not in the power anymore. But since he's not in the power anymore, your 2 minutes and 45 seconds clip, which you claim that was a statement, you know, that was not a question. And you called yourself a journalist. You are not a journalist, because if you are a journalist, you should have asked a question. You didn't ask a question. You just gave your statement because you were trying to represent Niazi, your leader, and you were trying to highlight the human rights violation. You did not highlight human rights violations. You were trying to highlight your point.
And I hope you have evidence, because this thing is not going to stop here, because you accused Asim Siddiqui being a part of or employee for the embassy of Pakistan or establishment or military establishment, and clearly your own person who you were trying to defend is calling you on a national TV while your prime minister is sitting in the group, and he's asking you, the same establishment provided the documents and videos to you guys to accuse the previous government, which was Mian. Am I right? राइट। Yeah. अच्छा, ये जो वीडियो है, आप पहले ये वीडियो देख लें। मुझे इनकी इन्वेस्टिगेशंस की वीडियो दिखाई है। मोहित भाई, देखा है ना? पढ़ी है आपने फाइलें? आपने भी पढ़ी हैं। हमें फाइलें इन्होंने पढ़ाई हैं, हमें वीडियोस दिखाई हैं, हमें ऑफिसर्स मिलवाए हैं। जी, आपने वीडियो देखी, तो इससे तो मतलब सबको पता है कि आप पहले एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम कर रहे थे और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ कर रहे थे, हम नहीं थे वहाँ पे, लेकिन सबको पता था कि क्या होने वाला था, क्या किया है, और अगर ये नहीं रुकता तो पाकिस्तान में क्या हो जाता। उसके बाद फिर आप यहाँ आ गए और यहाँ आके आपने अपना सिलसिला रोका नहीं, आपने कंटिन्यूसली पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप बात करते रहे, क्योंकि आपकी मर्ज़ी की गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं है। तो नाज़रीन, मैं हरगिज़ मतलब इनसे मेरा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, ना मैं इनको इतना सुनता हूँ, लेकिन मैंने इनको जब गूगल किया तो फिर मैंने कहा यार, गूगल तो आप मुझे भी कर सकते थे, मेरा भी एक दो नाम तो आ ही जाते। आज टीवी पे मैंने मतलब सालों लगाए हैं और अखबारों में काम किया है। इस वाशिंगटन, वर्जीनिया, मेरीलैंड, डीसी में मेरा ख़्याल है हर दूसरा शख्स मुझे जानता है। अगर आप गूगल कर लेते तो मैं भी मिल जाता आपको, लेकिन मैंने जब आपको गूगल किया तो मुझे तो अजीब सा लगा कि आप तो मतलब गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। आपको मतलब आपके लिए तो मुझे 2015 में तो वो सब कुछ हो चुका है आपके साथ, जो अखबारों की हेडलाइन भी बनी। तो मैं समझता हूँ नाज़रीन, आप खुद फ़ैसला कर लें। अगर आप पीटीआई से हट कर सोचेंगे तो शायद आपको इनका असल चेहरा नज़र आएगा, लेकिन अगर आपको पीटीआई में ही रह के इस मुल्क का सत्यानाश करना है तो बिल्कुल आप देखें और आपको बड़ी खुशी महसूस होगी। और आप तो आजकल महफिलों में बैठ के कह रहे होंगे, देखा जी मोहित पीरज़ादा ने आसिम सिद्दीकी की क्या हो किया। जी, मेरा कुछ नहीं किया आपने, आप मुसलसल पाकिस्तान के लिए जो है ना वो बाइज़ ज़हमत बने हुए हैं और मुसलसल यहाँ पर, और वो लोग जो वहाँ पे फ्रंट रो पे बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज पीटीआई ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल पे उन पे सरकर लगा करना, उनको क्या कुछ नहीं। देखिए, किसी भी मुल्क को अगर आपको कमज़ोर करना है ना तो उसको आप फ़ौज से जो है लड़ा दें, उसके बाद फ़ौज की मकबूलियत ख़त्म होगी, फिर क्या होगा उसके बाद। तो मेरी समझ में भी यही है आया कि नहीं, इस वक्त जो है हमें सही बात करनी चाहिए, हमें सही ट्रुथ दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान वैसे ही इतना मुश्किल से सरवाइव कर रहा है, उस पे एक ऐसा कल्ट आके बैठ गया है जो मतलब इमरान खान, बस उनको यह है कि पाकिस्तान रहे या ना रहे, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी जो है वो ये राइट रखती हैं कि वो इस कल्ट को किस तरह से ख़त्म करना है, किस तरह से तोड़ना है, और मुसलसल आप उसी तरीके से हरकत करें। लेकिन हमने देखा कि अभी पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर मैंगो पार्टी भी हुई, मैंगो फेस्टिवल भी हुआ, उसमें भी हमें कई चेहरे ऐसे नज़र आए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेवल पे जो यहाँ ऑफिशियल्स हैं वो उनसे दोस्तियाँ ख़त्म नहीं कर रहे। और सबसे नाज़रीन बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि वहाँ पे प्रेस काउंसलर साहब मौजूद थे एम्बेसी के अपने एक और असिस्टेंट के साथ, और वो जाके मोहित पीरज़ादा के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि सर मैं ये हूँ। मतलब एक शख्स जहर उगल रहा है पाकिस्तान के बारे में और आप अपना इंट्रोडक्शन उनको बता रहे हैं कि सर मैं हूँ। पहली बात तो ये, वहाँ पर आपको होना नहीं चाहिए था, और अगर आप वहाँ पे थे तो आपको ऐसे शख्स के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं कायम करने। आपने कौन सा डिप्लोमेसी करनी है उनके साथ या उनका सिटीज़नशिप में हेल्प करनी है। तो पाकिस्तान एम्बेसी को भी कहूँगा कि जिन लोगों ने आपके घर के बाहर आपको लानते दिखाई हैं, जिन लोगों ने आपके एम्बेसी के बाहर पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ नारे नहीं लगाए, बल्कि आर्मी चीफ को फांसी दो, आईएसआई मुर्दाबाद, यही आपके मज़र चुगताई, जॉनी बशीर, ये सारी वीडियो आप लोगों के पास है, मैं लगा चुका हूँ। किसी सहाफ़ी में भी हिम्मत नहीं हुई कि ये वीडियो वो कैप्चर करके लगाए, लेकिन मैंने लगाई। जो कर सकते हैं आप करें,
क्योंकि यही ट्रुथ है, यही सहाफ़त है। हमारे यहाँ सहाफ़ी जो हैं वो इन्हीं 3.5 साल में इमरान खान के इन्हीं के घरों में बैठ के खाने खाते थे, नाश्ते करते थे, अपनी पार्टियों में बुलाते थे। और आज भी जो रिसेंटली पार्टी भी हुई है, उन्हीं लोगों को उन्होंने अपनी पार्टी में बुलाया है जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान की एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ यहाँ नारे लगाते हैं, नफ़रत आमेज़ जुमले कहते हैं। मैं उन लोगों को भी वार्न करना चाहता हूँ कि जो अब आने वाले 14 अगस्त में भी जो है वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनको 14 अगस्त मनाने का अब कोई राइट नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि वो पाकिस्तान के लिए जब इस तरह के अपने दिल में जो है इतनी नफ़रत रखते हो, तो तुम लोग क्यों और वहाँ पे आके तुम पीटीआई का झंडा लहराओगे। याद होगा तुम लोगों को, मैंने कहा था कि अगर मैंने 6 सितंबर, 23 मार्च, 14 अगस्त या किसी भी पाकिस्तान डे पे किसी भी सियासी पार्टी का जलसा देखा तो मैं वो जलसा कवर नहीं करूँगा। और तुम लोग मेरे को देख के ना अपने झंडे उतारते थे, भूल गए होगे शायद, मेरा ख्याल है। खैर, मैं तो अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता और ना ही मुझे किसी की हमदर्दियाँ चाहिए। वसीम साहब, आज का हमारा प्रोग्राम बस ऐसे ही बैठे बैठे बन गया और हम जो है ये जो चिड़ियों की वो सुन रहे हैं। और इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन से मैं इतनी देर बोल, आप सोच रहे होंगे कि अब मैं भी कुछ No, it's बोलूँ। good. It's good to hear that. अच्छा देखिए, इसमें आसिम जो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है they should know this कि कम्युनिटी को they have draw a line, ठीक है। आपको लाइन ड्रा करनी पड़ेगी कि आई मीन यू कैन फॉलो मेजॉरिटी जो हमारे लोग हैं, majority of our people from that part of the world. Myself, I came here for 30 plus years ago. They love to follow Pakistan politics and leaders, and their group been following Nawaz Sharif and Zardari, and now they have Imran Khan. That's okay. That's fine. You guys can do it. One of the main guy, who's been running this show, and rest of them are just following him like whatever you call it. He came to me and he said the reason, because you told me, Mr. X, the reason you backing down from 1,800 doctors to 1,200 doctors, and you have 65 signatures from doctors who are supporting Imran Khan and PTI, and then ousted Imran Khan and all that stuff. And you told me the reason you backing down because of one group of people who do you think will cause problem in the future, and you don't want to be part of that. And I know you're listening. I know you're going to watch this program, and I know people are going to send you links and you're going to watch it because I'm on it. And I said it. And you walked out of that entire thing. When I saw you sitting on the front row, that tells me you yourself playing a double game. You yourself are confused. You yourself don't know what you want, because what you told me and what you're doing is completely opposite. Everybody have the right to do whatever they want to do. So am I. And I have told you, and I'm telling you again, you keep on doing what you're doing, and I'm going to keep on doing what I'm doing, because what you guys doing, and it's not I'm saying that, you told me that can be dangerous in the future, and then you became a part of that. You understand that what I'm saying, right? So standing up there, and then Muhit Pirzada coming out talking about human rights. Where were you, Muhit? Let me ask you a question. To many of those Pakistanis or overseas Pakistanis, you might be the icon. Where were you when those journalists from Pakistan were kidnapped? Matiullah Jan, Hamid Mir, and so many other people, right? Where were you? Where were your human rights? Where were your saying of human rights? You were nowhere.
No, you're going to come here to my city in Washington, D.C. You're going to talk about human rights. You're going to just lay down the whole nonsense. You're going to talk about like how, you know, the ruling government, the PDM, is trying to ruin this. Where were you when they walked into, what's his name? What's her name? The three-time prime minister, four-time prime minister Nawaz Sharif's daughter, when they break into her room in a hotel. Where were you? What did you say? You're gonna come here in Washington, you wanna talk about the human rights, and you're gonna just cry about what they have done to you, and then FBI is investigating you. Who the hell are you? The FBI is working for you. Nobody knows you. You're a resident. And on top of that, you know, Asim was just like trying to Google your information, and you yourself, I'm not saying that you're a criminal, but you are proven criminal in Dubai. You were proven criminal, and you were reported in Dawn, which was, that is one of the biggest English newspaper in Pakistan. You were on the front page. You have done criminal stuff under your belt. And by the way, you know, you claimed in your video you because you were saying you were a U.S. resident. Let me tell you this. Here's the news for you. I'm not sure if the international laws apply. If you are a U.S. resident, you will never ever become a U.S. national. You will never ever become a U.S. citizen because you're a criminal, because you were caught by UAE while you were conducting a criminal act there. They took you. You understand that? So you have to understand, if you were trying to brag about the human rights, let's talk about human rights about so many other people, not about two people, two individuals who belongs to your party, the party you think should be ruling the Pakistan. Myself, I can be careless. I don't give a damn about who is going to run the country. You get it? I stand for the rights. I tell these people, stop doing what you're doing. They continue to do so, but they deny in the private meetings. All these people in Washington who run the PTI show, they deny. They say they have nothing to do with the PTI. They're not going to arrange more programs. But guess what? They're doing it. This is the very reason I'm here today. And I'm telling you, what you have said, and you accused Asim Siddiqui for being a part of establishment. You yourself a part of establishment. Look at you. Grab your own videos and clips from YouTube. You were part of an establishment. Now you have to prove it. Because what I'm going to do now is, you know, I'm going to help Asim. I'm going to help him to get an attorney. I'm going to help him to find out, so you can prove it to the court. And you can prove it to the U.S. Congressman. Brad Sherman was there when you were in the Raven building, and you accused Asim he was a part of establishment, and he is trying to do all this stuff because he's trying to ruin the Larry King of Pakistan. You're nobody. So I'm going to make sure Asim get a good attorney. So if you are liable for the lawsuit, you're going to get one. And I'm going to make sure you get one because you accused on Capitol ground somebody, and I hope you have documents. Okay. I'm not with you on that. I'm sorry, but I gotta say it, you know, because it was wrong. वसीम जो है वो बड़े अच्छे यहाँ पर हैं, और हमेशा जो है वो सच के लिए लड़ते नज़र आए हैं यहाँ पर। तो आज बैठे बैठे, ये प्लान नहीं था, मैं ख़ुद अकेले शो करता लेकिन मैंने कहा कि चलें ठीक है, थोड़ी सी कंपनी मिल जाए। तो ये बात कर रहे थे कि सहाफ़ियों की आसमा शराजी, आप कहाँ थे जनाब जब आसमा शराजी के साथ जो कुछ किया है आप लोगों ने, या और जो खातून एंकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, सहाफ़ी जो हैं, उनके साथ जो आपने क्या, मर्द को तो छोड़ देना, मर्द के साथ तो ठीक है ज़माना करता आया, कोई बात नहीं, वो सह भी लेता है, जो औरतों के साथ आप लोगों ने किया है, तो शर्म तो बहुत आती है। मैं किस किस का जिक्र करूं, ना ही इतना टाइम मेरे पास है। मैं तो आपको गूगल करके खुद ही थक गया। मैंने कहा यार मैं अभी इस शख्स के बारे में, लेकिन चलें, मेरा ख्याल है कि मैं तो समझ रहा था कि अभी तो एक ही के ऊपर था उसका बदतमीज़ी का और मारने का, वो अब जो है वो आपके ऊपर भी कुछ ना कुछ होगा। तो बाकी तो जो जर्नलिस्ट हैं हमारे यहाँ पर, जो सो कॉल्ड एसोसिएशन बना के भी बैठे होते हैं, उनको तो कहीं से पैसे मिल रहे होते हैं,
और उनका खाना पीना चल रहा होता है, जर्नलिज्म कहीं की बात नहीं है। मैंने नहीं देखा कि किसी ने जो हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड अपने आप को एसोसिएशन के मेंबर और ये सब कहते हैं कि उन्होंने कहीं से कोई आवाज़ उठाई या कोई ऐसी बात की कि जनाब के हमारे जर्नलिस्ट के साथ, ये वो सब जानते हैं मुझे। हम तो इस क्रैश से नीचे आए हैं, हम तो आर्टिकल से, रिपोर्टिंग से, टीवी में, फिर एक दूसरे टीवी में, फिर तीसरे टीवी में, फिर चौथे टीवी चैनल में कर करके यहाँ तक पहुँचे। और हमें ज़रूरत भी नहीं है आपकी दोस्ती की, आप मुझे जाने या पहचाने, लेकिन जो आप कर गए हैं मेरा ख़्याल है वो काफ़ी है। तो अब उसको सहने के लिए तैयार रहें आप यकीनन। तो अगर गूगल करके मुझे अपना एड्रेस भेज दें ताकि लेटर मिलने में आसानी हो, वरना हमें ढूंढना पड़ेगा आप कहाँ हैं। तो मेरा ख्याल है वसीम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखिए आसिफ, देखिए we can do the closing remarks, but I just want to let them know the people who have organized this, the people who were part of this, this is this program was done by the PTI, and initially, and I hope you play this section. Initially, they were gonna arrange, and this is for the audience who are not aware of what's going on in Washington D.C. So I just want to let you know. Initially, local PTI was arranging 1,800 to 2,000 doctors on Capitol Hill, and they told me personally. And the OIC, what's his status now? President, whatever, secretary. Mr. Johnny Bashir. Oh. And he was a previous president of USA, and then he was the president of PTI in Washington D.C. area. Initially, he said he's going to have 1,800 doctors, then we're going to have 1,200 doctors, then we're going to have 1,500 doctors, but only 6 show up on Capitol Hill. Not 6. Not even 6? Not even 6. I'm exaggerating. 6 women show up on the Capitol Hill. That's number one. Number two, 3 questions were took, and those were from the PTA representative. Number 3, all those things you guys have been doing, and this program was conducted, in my opinion, it's my personal opinion, is going against the state of Pakistan. You guys continue to damage and continue doing your best to bring international forces, international departments, and that's what one of your PTI confused immigrant to America was asking the congressman to launch international investigation. Let me tell you this. When you ask on Capitol ground to launch an international investigation into Pakistan, that is against Pakistan. लेकिन वसीम ये वाली बात जो उन्होंने कही, ये तो ब्रेट शर्मन ने उसको एक तरह से डिनाई किया। उसने कहा कि exactly they have nothing to do with this because they cannot interfere. Yes, क्योंकि आप इस तरह करिए। Yes, let me tell you this. The reason, and I want to highlight this point. You can come to Washington, anybody come to Washington, and you can ask a congressman a question. America is a democracy. Any single American congressman from the local level to the national level is going to stand for election. So let me tell your audience this, because PTI is trying to promote this agenda. We asked the question, and U.S. Congress is asking for a free and fair election. Let me tell you this. Anybody can come and write to U.S. Congressman. I can provide you all 459 congressmen emails. They will tell you the same thing. They want the free and fair election. It has nothing to do with the PTA and Imran Khan and these few faces from DC or few faces from Houston. These people are nobody. In America, they have a zero value.
So remember, if American congressman is saying they want free and fair election, they're not endorsing Imran Khan. They're not endorsing these clowns from locally or from different states. They're not endorsing anybody. They're just telling what they're supposed to tell, because they're telling you, because American system is based on democracy, and they're going to tell you the democratic values. Yes, we want the free and fair election. That doesn't mean they're endorsing Imran Khan's statement. And I'm going to clear that point for them. No, let me tell you this. What these people are doing, they are creating these small events and trying to promote like it's a mega event. It's not a mega event. You can come and ask all sort of questions, like the guy Muiz, so-called the Larry King. You're not Larry King, dude. You can ask questions. Okay. You will get an answer. And he completely rejected you, and he threw it in a bucket. He threw it in a trash can, because they're not going to endorse you, what you were saying, because you did not ask a question. You just throw out your statement. एक्चुअली That's what it was. नाज़रीन, बस आखिरी में अपने क्लोजिंग Please, रिमार्क्स go में on, ये yeah. कहूँगा कि अभी मैं अटलांटा में था, तो तकरीबन 50 के करीब 50 प्लस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल से वहाँ पे मौजूद थे, इंक्लूडिंग सेनेटर्स. तो वहाँ पर जब लोगों से मेरी बातचीत हुई, इंटरव्यूज़ वगैरह किए, मुस्लिम अमेरिकन मुस्लिम हेरिटेज मंथ मनाया जा रहा था, तो अमेरिका के अंदर इतनी खूबसूरती बात ही यही है, सब बराबर हैं. Exactly. आप अगर बुरे भी हैं ना, तो उनकी नज़र में बराबर हैं, अनटिल अनलेस कोई फिजिकली आप कोई ऐसी बात ना कर जाएं, या किसी और के हकूक़ को ना छीनें, या किसी और के राइट में, जैसे आपने डायरेक्ट मुझे इन्वॉल्व कर दिया किसी और के साथ कि जी मैं उस पेरोल पे हूँ. तो सोचें, कल को मैं पाकिस्तान जाऊँगा, आपके तो 10 लोगों ने सुन लिए होंगे, उनको तो पता होगा कि भाई आपने क्योंकि कह दिया है, तो मेरे को भी नुकसान हो सकता है, अमेरिका के अंदर नुकसान. तो हमारे यहाँ आप जब पाकिस्तान से आते हैं ना, तो आप समझते हैं कि जो बोल दो, जिसको बोल दो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं. नहीं नहीं, अमेरिका, यहाँ पर मैं अमेरिका का शहरी हूँ, आई लव दिस कंट्री. इसने मेरे तमाम ख्वाबों की, आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, ज़रा गूगल करके देख लीजिएगा. इस कंट्री को सर्व किया एज ए स्पोर्ट्स, नेशनल टीम में सर्व किया है. लेकिन वो सब चीज़ें मैं अपने लिए करता हूँ ना. तो खैर, चलें, आने वाले दिनों में आपसे ज़रूर मेरा ख्याल है रब्ता होगा. आपसे नहीं होगा तो फिर कहीं मेरा ख्याल है अदालत में हो जाएगा. तो वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नाज़रीन, हम आपको अपडेट देते रहेंगे. और जो शर पसंद नासर हैं, ये थोड़े से हैं, ये ज़्यादा नहीं है, ये बहुत थोड़े से हैं. बाकी बहुत सारे लोग वहाँ पर आए, उन्होंने, जो PTI के लोग भी थे, उन्होंने हाथ भी मिलाया, गले भी लगे, नॉर्मल उसमें बात भी की. वो पीछे से काम कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे से भी काम कर रहे हैं, आगे से भी काम कर रहे हैं, और हर वक्त उनका जहन ऐसा रहता है कि पाकिस्तान को डैमेज करें, पाकिस्तान के जुडिशरी को डैमेज करें, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को डैमेज करें. मैं पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहता, क्योंकि आपने जितना करना है एक पॉलिटिकल पार्टी को गालियां दें, दूसरी को दें, तीसरी को दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो आएंगी चली जाएंगी, आएंगी चली जाएंगी. लेकिन जब आप इदारों को डायरेक्ट बातें करेंगे ना, तो यस, आप डायरेक्ट आम पब्लिक को स्पेसिस पे बैठ के इदारों के बारे में बात करेंगे, तो और उन्हीं इदारों के चमचे आप बने रहें. आपने 3.5 साल जो है, आप उनसे बाकायदा, अभी आपने सुना कि इमरान खान रियाज क्या कह रहे थे कि मोहित भाई, आपको पता है ना कि वो हमें दिखाते थे सब कुछ. तो एज ए जर्नलिस्ट तो उनके पास जाना ही, आपने जर्नलिस्ट के एथिक्स की खिलाफ वर्जी कर दी. आप तो फिर जर्नलिस्ट हैं ही नहीं. नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए. मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप इसको क्लोजिंग रिमार्क्स में कह रहे हैं कि मैं आई जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज टू द लोकल्स राइट हियर. आई वांट यू टू नो दिस. Every time you arrange such program which goes against the state of Pakistan, which goes against the interest of state of Pakistan and the institutions of Pakistan, you guys will be called out, and I will make sure your names will be exposed. Hiding will not be the solution. Either you're going to stand for Pakistan, you can stand for whatever party you choose to.
abusing institution, ruining the name of the country, just because your chosen saint is not there, it's not going to be acceptable. We're going to challenge you, guys. We're going to make sure we will bring you out in the limelight to make sure we will give our point of view to let the community know. And I'm going to request the community as well. I know there's a large community, huge community, who are against whatever is going on. I'm going to request them, please come out, stand up, and stand for Pakistan, stand for America, because Pakistan is the motherland. That's where we belong. America is our adopted home. May God bless America. Long live Pakistan. And I hope sanity prevail. And I hope these people understand that we should always stand for the unity of the community and for the nation and for America. Thank you so much for having me, Asim. थैंक यू नाज़रीन, And may इसी God के bless साथ you all. इजाज़त दीजिए, काफ़ी देर हो गई। अगले प्रोग्राम तक के लिए आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। Washington Night Show with Asim Siddiqui.